Tensions erupted in central Nagpur on Monday after a protest demanding the removal of Aurangzeb's tomb turned violent, injuring several people as well as policemen. Police used tear gas and batons to control the crowd in multiple areas, whereas 15 people were arrested during searches in the Mahal area. Witnesses reported chaos as miscreants damaged buildings and torched vehicles. Videos from the scene showed burning vehicles and debris. At least 2 JCBs were destroyed and 1 firefighter was injured. So what led to the clashes? Well, police traced the violence back to rumors that the Quran was burned during a Bajrang Dal protest. Videos of the protest spread quickly on social media, causing outrage within the Muslim community. A complaint was filed alleging the burning of the holy book, leading to large gatherings of people in various parts of the city. And what was the VHP demanding? Well, the Vishwa Hindu Parishad, that is the VHP, had earlier demanded the removal of Aurangzeb's tomb, citing his history with the Marathas. They argued that his tomb symbolized pain and slavery, referring to his role in executing Chhatrapati Sambhaji Maharaj and destroying temples. Opposition leaders blamed the state government for fueling tension. They criticized ministers for making provocative statements, accusing them of failing to prevent the violence. Meanwhile, Maharashtra CM Devendra Fadnavis and Union Minister Nitin Gadkari urged citizens to remain calm and not fall for rumors. नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नज़र रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूँ कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए। In response to growing unrest, police increased security, monitored gatherings and mandated visitor registration to ensure safety. For more updates on the same, keep watching India TV News.